very good morning, dear students. I hope you all are doing very well. Today I will discuss with you a topic from AECC Writing Skills course, Ability Enhancement Compulsory course, and the title is Letter Writing. You have been doing letter writing since your 6th standard maybe, or maybe prior to that, right? Now, there are certain rules and methods which you already know how a letter is written. But still, I would like to touch upon certain aspects which you should keep in mind while writing a letter. As far as your course is concerned, you have formal letters and informal letters. Okay? Formal letters which are official, which are written for offices, and then you have business letters which are written to various businesses, and articles that sorry, not the articles but the letters that you write to a newspaper and all also fall under the category of formal letters. So they have a different pattern, right? Then we have informal letters, which again somewhat similar pattern of writing is there, but with certain little changes. Okay, informal letters which are written to friends, to your people whom you know, father, mother, family and friends. That is what are informal letters. Now, letter writing is something which has become outdated in our life. Do we write letters? I doubt. We write letters only for the exams when it comes in the question. Otherwise, I doubt. Now, what do? We write mails, which too is a kind of letter writing only, right? And now, since there are, we say that computers are used for using or writing letters, a format that is there on the system. So कुछ changes हैं जो letter writing में आए हैं, जैसे कि हम जो punctuation है, commas डालते हैं, full stops डालते हैं, we don't use them. अगर use करना है तो appropriately use करो, which is not possible. So I am suggesting that you will not use punctuation marks in the heading or at places where we used. Number one, avoid punctuations at some places. Okay, leave aside the body. Body के अलावा हम punctuations नहीं use करेंगे. Then everything will come with the margin. ठीक है? And you will use names. जैसे कि मैंने नोटिस में भी आप लोगों को बोला था शायद, अब हम एग्जामिनेशन हॉल, ABCD नेम, ये सब हम नहीं यूज़ करते हैं. आप कोई भी नाम लीजिए, अपना नाम नहीं लेना है, किसी और का लिखिए, बट यूज़ नेम. नो मोर एग्जामिनेशन हॉल, नो मोर नेम ABCD. ये 3 बातें आप प्लीज़ कीप इन माइंड. ओके, नाउ एज फार एज let us first talk about your informal letters. Here is the margin, right? The first thing will be the heading. Then it is followed by a salutation. Salutation, आप letter किसको address कर रहे हो? Then is the body, and then is your ending. ये 4 important parts हैं informal letters के. मैं लिख देती हूँ, हम पहले informal letters की बात कर रहे हैं. ओके, heading में क्या आता है? Heading includes the sender's address, okay, with date. Clear? Salutation, dear, or my
dear, ये salutation use करते हैं, dear father, dear mother, my dear friend, whatever. Okay, these are the salutations which are used in informal letters. Then comes the body. When we are writing the body, first thing which we have to keep in mind is that the sentences should not be long. Grammatically correct. Correct sentences should be written, and the body begins at the margin. And we generally avoid I in the body. Okay, these are the things which you need to keep in mind as far as body is concerned. Lastly is the ending, where you can write yours lovingly, yours affectionately, Okay, these are the salutations which you can use in the ending. And उसके बाद अपना नाम लिखें. XYZ ABC नहीं लिखना है, please. Okay. Now let us take an example. Let us write a letter to your father. Write a letter to your father to increase your pocket money. Okay. Now the sender's address, that is your address with date. XYZ examination hall नहीं लिखेंगे हम. Okay. ये आ गया हमारा margin of the copy. Okay. And you will give your address. The Mall Road, let us say house number 607, the Mall Road, Solon. ये आपका first part आ रहा है, that is heading. Okay, Solon followed by date 8th December 2020. मैंने कहीं कॉमा नहीं डाला है, कहीं फुल स्टॉप नहीं डाला है, आप भी नहीं डालेंगे. ओके, दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग इट. क्लियर? Salutation. You can write respected father also, or my dear father. मैं फिर से कॉमा नहीं डाल रही हूँ, ठीक है? You can write namaste if you want. Dear father, I hope all is well back home. I am writing this letter to request you to increase
my pocket money as the as I want to buy some reference books. I hope you will consider my humble submission. फॉर्मल लेटर में थैंकिंग यू, इनफॉर्मल लेटर में थैंकिंग यू नहीं आएगा, ठीक है? डोंट फॉरगेट दैट. देन योर्स लविंगली रमेश. यहाँ पे पंक्चुएशन आएगी, ठीक है? प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा. यहाँ पे पंक्चुएशन आएगी बॉडी में, बट अदरवाइज वी विल नॉट डू दिस, ठीक है? और ये पोर्शन आपका, ये एंडिंग आपका, ये वाला पोर्शन 1, 2 और 3 को अच्छे से दिखे. व्हेन यू हैव रिटन द आंसर, व्हाट यू डू इज, इतना लिखने के बाद लीव अ लाइन, माय डियर फादर, लीव अ लाइन, एंड देन स्टार्ट विद द मार्जिन. और ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये सब मार्जिन के साथ आ रहा है. This is the most important thing you have to remember, that everything will come with the margin, and we will be avoiding punctuation marks in heading, salutation and in the ending. And no thanking you, no examination hall ABCD, no name XYZ will be used in writing letters. Okay? Informal letters. Formal letters में भी आप नहीं use करेंगे XYZ blah blah blah. राइट नाउ अगर हम इसी में देखें कि इनफॉर्मल लेटर में क्या चेंज आएगा, कैन यू मेक अ गेस what could be the change? The only difference being that here after the sender's address, the next will be the receiver's address. ठीक है? ये आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हो जाएगा, है ना? हेडिंग, that is the sender's address with date, then your receiver's address, then the salutation, then the body, then lastly will be the ending. No lovingly, affectionately. Generally हम क्या यूज करते हैं? Faithfully, sincerely. Yours faithfully, or let us say sincerely. Okay, this is what is used. And here the salutation में dear नहीं आएगा जब हम formal letters लिखेंगे. You can just write sir, and if you're writing to somebody very very dear to you and respectful, you can write respected sir, madam. और एक चीज मैं यहाँ मैडम से रिलेटेड आप लोगों को समझाऊं. सोशल मीडिया ने हम सबको बर्बाद कर दिया है, व्हाट्सएप ने बर्बाद कर दिया है, भाषा को बर्बाद कर दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं, है ना? गॉड ब्लेस यू GBU बन के रह गया है, थैंक यू TY बन के रह गया है, THE द बन के रह गया है, और कॉज बिकॉज COZ बन के रह गया है, ऑसम AWSM बन के रह गया है. सो वी हैव डन व्हाट, वी हैव बुचर्ड, कत्ल कर दिया हमने, कत्ल जिसको बोलते हैं ना, वी हैव मर्डर्ड द लैंग्वेज. सो what was I trying to tell you through that?
now I forgot why I was telling you this. Yes, madam. आप लिखते हैं मैम, ये क्या होता है? कई लोग तो मेन भी लिखते हैं MAM. Please see, it is मैम. नहीं तो मैडम लिखिए पूरा, नीचे सजेशन में आता है ना, उसको क्लिक करोगे तो टाइप नहीं करना पड़ेगा. ओके, मैम इसका शॉर्ट फॉर्म है, मैडम का शॉर्ट फॉर्म D अपोस्ट्रोफ, जिसे ऑनरेबल में होता है अपोस्ट्रोफ, दैट वेज. एंड दिस इज सोशल मीडिया की देन. ओके, सो अवॉइड दिस, राइट. आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो. Now this is the pattern of formal letter, right? एक formal letter लिख के देख लेते हैं, कोई example लेते हैं. Let us keep this same and let us write a letter to the principal requesting her to grant you leave. लीव एप्लीकेशन या माशाल्लाह ऐसे लिखते हैं ना कि बस मैं क्या बताऊँ. खैर आपके लिए तो हम बोल नहीं सकते बिकॉज आपकी अभी हमने ऐसी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है. यू हैव नॉट बीन एबल टू कम फिजिकली टू द कॉलेज, बट पीपल, योर सो कॉल्ड सीनियर्स, लेट्स डू इट. Again, it remains the same. Now, after the address, यहाँ नहीं लिख रही हूँ मैं, आगे नहीं लिख रही हूँ. जनरली पहले हम क्या करते थे, टू लिख के फिर आगे लिखते थे. द प्रिंसिपल GC Solan. Always a formal letter will have a subject. अब जब आप इसको नोटबुक में लिखोगे ना तो लाइन छोड़ दो, फिर वो क्लियर हो जाता है. हाँ, एड्रेस और डेट लिख के लीव द लाइन. ये अवॉइड भी कर सकते हैं हम, ये फॉर्मेट में आपके बुक में दिया होता है, लेकिन आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो जब हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं. देन दिस कैन बी अवॉइडेड. बट से फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं लेटर किसको, ब्रांच मैनेजर को ऑफ अ बैंक, आपको कार्ड इशू करने के लिए. देन ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज, इसको आप लास्ट में अपने नाम के बाद भी लिख सकते हैं. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ ना भी लिखो, यू कैन राइट इट इन द एंड, योर्स सिंसियरली करके नीचे अपना एड्रेस दे सकते हैं अगर यहाँ नहीं दे रहे. एटलीस्ट एक बात ध्यान रखें कि एप्लीकेशन में आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, डेट आ जाएगा लास्ट में, towards the end when we finish the application, right? Get the subject leave for 3. जब हम फॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं ना तो हम न्यूमरल्स नहीं यूज करते हैं. 3 days न्यूमरल समझ गए ना, 3 नहीं यूज करना है, 3 लिखना है. Here you can put a full stop. Respected madam or respected ma'am, I request you, first of all, I am a student of your college. I am in BA first year. I request you to kindly grant me leave for
a religious ceremony at my home. फुल स्टॉप. ठीक है. थैंकिंग यू यहाँ नहीं आएगा, मार्जिन के साथ आएगा. थैंकिंग यू. थैंकिंग यू से पहले भी लाइन छोड़ो, थैंकिंग यू के बाद भी लाइन छोड़ो. yours sincerely or faithfully or whatever you like, with your name and your class and your roll number. यहाँ लिख रही हूँ मैं, अपना नाम लिखोगे, ऐसे मत लिखना. yours sincerely के बाद रमेश, BA फर्स्ट ईयर 5056. और अगर हम ऑब्वियसली हम ये नहीं लिख रहे हैं तो जहां हमने ये फिनिश किया ना 5056 के बिल्कुल ऑपोजिट आप डेट डाल सकते हैं. ओके, दिस इज हाउ यू विल डू. तो एक बात हम ध्यान रखेंगे कि हम एप्लीकेशंस में, जो कि हम कॉलेज में प्रिंसिपल को एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, उसमें हम ये एड्रेस नहीं लिखेंगे. वी विल अवॉइड इट. लेट अस से वी विल अवॉइड इट अदरवाइज ऑल्सो. हम बैंक के लिए लेटर लिख रहे हैं या हम पोस्टमैन को लेटर लिख रहे हैं, व्हाट वी विल डू, हम अपना एड्रेस लास्ट में डाल देंगे. अगर आप ऊपर भी डालते हो देन ऑल्सो इट इज नॉट टेक्निकली रॉन्ग. what you have to keep in mind that everything should be in with the margin. और जब आप आंसर लिख रहे हो, जब आप लेटर लिख रहे हो, लीव लाइन्स सो दैट वी अंडरस्टैंड आपका जो एक लेटर जो आपने लिखा है, चाहे फॉर्मल चाहे इनफॉर्मल, इट इज प्रेजेंटेबल. प्रेजेंटेबल इन द सेंस आपकी हेडिंग क्लियर हो, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी और एंडिंग, ये जो हो ना, ये सब जो इसके लेटर राइटिंग के पार्ट्स हैं, ये क्लियर हो. और वो क्लियर करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज लीव अ लाइन. यहाँ पे लीव अ लाइन, लीव अ लाइन, देन लीव अ लाइन, सब्जेक्ट लीव अ लाइन, देन इन द एंड थैंकिंग यू लीव अ लाइन, उसके बाद भी लीव अ लाइन. योर्स सिंसियरली के बाद आप सारा इकट्ठा लिख के डेट डाल सकते हैं. ओके, सी ज़्यादा कोई फिक्स्ड हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं चेंज हुए हैं. चेंज सिर्फ इतना सा है कि एवरीथिंग कम्स विद द मार्जिन. पंक्चुएशंस हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, बिकॉज कभी हम कॉमा डाल देते हैं, कभी हम फुल स्टॉप डाल देते हैं. तो बॉडी के अलावा वी अवॉइड द पंक्चुएशन मार्क्स. मैंने यहाँ सब्जेक्ट में ज़रूर यूज़ किया है, आप भी यही यूज़ करेंगे, सेमी कोलन सॉरी, एंड आई हैव पुट अ फुल स्टॉप ओवर हियर, एंड देन रिस्पेक्टेड मैम के बाद मैंने कॉमा नहीं डाला है, राइट. So this remains a pattern of letter writing. Rest जो एक तरीका था कि पहले हम अपना एड्रेस लिखते थे एंड देन द एड्रेस जिसको हम लेटर भेज रहे हैं, फॉर्मल लेटर की बात करें, से फॉर एग्जांपल हम एडिटर को लिख रहे हैं, ट्रिब्यून के, ब्रांच मैनेजर, बैंक के मैनेजर को लिख रहे हैं अकाउंट खोलने के लिए, और वी आर राइटिंग लेटर टू द पोस्टमैन, और वी आर राइटिंग लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर. सो उस चीज़ में आपने confused नहीं होना है. If you are writing it on the top, then also it is correct. If you are not writing there and you are starting your letter with to the deputy commissioner, or you are starting it with to the branch manager, then ये address आप last में डाल दें. बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है. Okay? Nothing at all complicated. बस ये ध्यान रखना है, everything with the margin, avoid punctuations, body जो आप लिखते हैं that should be grammatically correct. Okay, remember this thing and don't get confused about letter writing. मैं आपको जो questions दे रही हूँ, जो topics हम कर रहे हैं, अगर उसमें अपलोड करने की ऑप्शन नहीं है, then I am sharing the other email जिसके ऊपर आप उसको सेंड कर सकते हैं. ओके, अदरवाइज आई विल ट्राई कि मैं आपको वहीं पे शेयरिंग की ऑप्शन दे दूँ. तो लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी चीज़, चाहे फीचर आर्टिकल है या नोटिसेस हैं या नोट मेकिंग है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस, तभी आपको आएगा. ठीक है, बाकी कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन हो, you are always free to ask. That is all about letter writing. Thank you so much.